Hello everyone. Today we are going to discuss the chapter that is a coordinate geometry. So without wasting time, let's start it. What is coordinate geometry? Actually, coordinate means the coordinate of a point. And coordinate of a point, suppose we are discussing about a graph that is a x-axis, right? Okay, and here it is a y-axis, right? Okay, so every point is here suppose this is a point A. सो द पॉइंट कितना यहाँ पे x है, कितनी y से डिस्टेंस है, बेसिकली विद यहाँ y तो 0 है, बट दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A. कोऑर्डिनेट का मतलब अगर मैं कहूँ कोई पॉइंट है दैट इज अ B पॉइंट हियर, एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ B, तो द डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, ठीक है, and the distance from the y axis, that will be the coordinate. So up to the x will be the point, okay, and what is the y at this time, what is the y, what is the y, I don't know, but suppose it is y, so it is x comma y. So this is the coordinate of this. Clear it is? So that's called the coordinate. Now come to the coordinate geometry we are discussing about. In this, first of all, you should know that the coordinate of x-axis, the coordinate which is shows the x-axis, the point, that is called the abscissa. Okay, what is this? It is called the abscissa. Okay, and and the coordinate which is representing y-axis, that is considered as the ordinate. Okay, ordinate, right? Clear. So I think this is enough introduction, and now we are going to discuss about their formulas. First of all, you should know this. There is a 4 quadrant. You should know. You know now. So yeah, there is a 4 quadrant in our this third and the fourth, and I think you should know that all the coordinates are positive in the first quadrant. In the second, because it is x-axis, so x will be negative and y will be positive. Okay, yeah, y is positive here. Okay, now come to the third quadrant. In this, x is also negative and y is also negative, so all negative coordinates come in this. And now come to the fourth quadrant. In the fourth quadrant, the x is positive and the y is negative, so the coordinate belongs to fourth quadrant will be like this. Okay, so now come to the formulas. Now come to the distance formula. What is the distance formula? When two coordinates are given in a xy plane and you have to find the distance between them, then how can you find? This formula is made for that. Suppose we are discussing about this is the graph, right? Okay, so here it is the graph, and the 2 points are here, like this is A and here it is this is B. Okay, and you have to find the distance between this coordinate A and B. Suppose the coordinate of A is x1 y1 and the coordinate of B is x2 y2. So how can you find the distance between them? This distance formula is used for that. So x2 is the according to the value according to the coordinate, we will put the values of x2 y2 x1 y1, and we can get the distance between these 2 points. Okay, so let's come to the question. The question states that determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2 and -1 are collinear. First of all, you should know what is collinear. Collinear वो 3 या 4 पॉइंट्स होते हैं जो कि सिर्फ एक ही लाइन में एग्जिस्ट करते हैं, सारी के सारी एक ही लाइन में, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, तो वो कोलिनियर होते हैं. अब चाहे वो लाइन ऐसे हो, चाहे वो लाइन ऐसे हो, उस पर 3 पॉइंट्स हो रहे हैं, चाहे वो लाइन ऐसे हो, इन पे 3 पॉइंट्स हो रहे हैं, तो कैसे भी किधर भी कोई भी डायरेक्शन में हो, बट बात क्या है कि तीनों की तीनों क्या होने चाहिए, सेम लाइन पे होने चाहिए. तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कंसेप्ट को लेते हैं. हम सपोज मान लीजिए मैंने एक लाइन ले ली है ये, ठीक है, और मैंने इनके 3 कोऑर्डिनेट बना लिए हैं. मैंने मान लिया कि इनमें 3 कोऑर्डिनेट हैं और ये तीनों हैं, हमें चेक करना है, बट मैं ऐसा मान रही हूँ, ठीक है. तो ये A है, ये B है और ये C है, और ये तीनों एक एक के कोऑर्डिनेट्स है समथिंग. तो मैं एक बार A को ले लेती हूँ, ठीक है, कोई B है और कोई C है, ठीक है. सो डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं. हमने पॉइंट्स ले लिए हैं 1, 5. ओके, सो 2, 3 ले लिया है इसका, एंड ये है -2 एंड -11. तो अगर आपको क्या बोला गया, अगर आपको किसी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है या कॉलिनियर प्रूव करना है, दोनों ही क्वेश्चंस आपके इस क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे. सो लेट्स फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B. ठीक है, सो आई एम फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B. तो आपको 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला आ चुका है. Now we will put the values. I am using that distance formula. Okay,
So first of all, we will write here distance formula is d is equals to root of x2 minus x1 ka square plus y2 minus y1 ka square. So I am going to use it. So let's put the value. Here it is x2 minus x1. So x2 is here 2, okay, or x1 is 1. So square plus y2 is 3 and y1 is 5 ka square. So here we will get that root of 1 ka square, that is 1, or 2 ka square, that is 5, that is a root 5. Clear? It is the, now come to the next point, that is let's find the distance between B and C. So let's find. Okay, so here put the values. C, that is minus 2, or x1 will be 2 minus 2 plus, now put the value of y2 is here what, minus 11, and y1 is minus 3. Okay, so now it will become root of what, minus 2 minus 2 4 ka square, that is 16, and 11 minus 3 minus 11 minus 3 minus minus plus 14, square of 14, that is what, square of 14, 169 216, right? Okay, yeah, so it is 216, that means it will be the root of 232, I must say, है ना, 16 1 carry and cross multiply, that will be the 1 1, and okay, so yeah, 4 4 is 8. I must say something is fishy here. 14, the square of 14 is 196, na? Yeah. Square of, 1 second. So here it is 4 square, that is 16, plus 14 square, that is 196. When we add both of them, then we will get root of what, 6 6 12, 1 carry, 11, 1 carry, 212. Okay, now it is got it 212. Now come to the AC, but we have to find its 212 in a simpler form. So how can we get? Let's do it first. So when we do it 212, the factorization of 212, so here it is what, 2 106 2, it will be 52, and 226 2, and it is 13. So basically it's 4 root 13. Okay, so it is 4 root 13. Clear it is. Okay, now come to the next, that is what, AC. So in AC what will happen? Here it is minus 2, A is minus 1 square plus minus 11 minus 5 square, and that will be the yeah, so here it is. Now come to the solution, that will be what, minus 3, that is minus minus plus 3 square of 3 9 plus 16 square of 16 is 216, and when we add it, we will get 9 plus, that is 225, and that is equals to what, that is equals to square of 15. It is a square of 15, right? Okay, so we are observing that these are not collinear, because in the collinear case what will happen, if we will add two of them, okay, if we will add two of them, it will be equals to the third one. Okay, so here it is clearly visible that these are not collinear. Okay, now come to the next question. Find the points on x-axis which is equidistant from this and this. So what is this? Find the point on x-axis. There is a point which is on x-axis. So first of all, you should know about this, that if the point is on x-axis, okay, if the point is on x-axis, the y-coordinate will be 0. X-coordinate may be positive, may be negative, and maybe anything, but the y-coordinate will be 0. So we have to find the point on the x-axis which is equidistant from these two. Okay, so it may be equidistant from these two. So maybe here it is one point and maybe another point is here. So I'm taking it in this way. Okay, so I'm making one more figure on the x-axis. Supposing it is a x comma 0 and these two coordinates are equidistant from this. So here it is 2 comma minus 5 and here it is minus 2 comma 9, whatever may be the left right it may be. So yeah, from this we can find, we can also give the name to it. It's A, B and C. Here it is. So yeah,
we have to find the point. So first of all we will use the distance formula, because it is given to us that these are equidistant. So AB is equals to what? BC. So from this we can use the distance formula, and from that we can get the value of x. Okay, so let's, AB is equals to what? Here we will put the value of AB. Here AB will be what? X minus 2 ka square, okay, plus there is a y2 is 0, minus minus become will be plus square, and that will be equals to root of, here again what is distance formula states. guys मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ distance formula, उससे वीडियो लंबी हो जाएगी, but you have to write in the examination, right? okay, तो यहाँ पर हम जब BC की बात करेंगे तो that will be the x2, so minus 2, x1 that is x, right? okay, and now come to the y2 that is 9 and minus 0, so it will be equals to this. So now I'm going to solve it further. So here it is what, when we solve it, let's remove this, let's do the squaring both sides. So when we do squaring both sides, this square root will be removed, okay, when we squaring both sides. So from this what we get here, here we will get x minus 2 whole square, right? clear, plus 25, and that is equals to what? Here it will be minus 2 minus x whole square plus 81. clear it is? Yeah. Now I'm going to solve it further. So what will happen when we use a plus b, the identity of that? okay, so I'm gonna use that. So let's do it. So here it will become x square. We know that a square minus b square is equals to a square minus 2ab plus b square, right? And we also know that a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square, right? okay, so I'm gonna use this. So it will be x square minus 2x plus 4 plus 25, and that will be equals to, when we use it here, it will become 4, minus minus will become plus, okay, so it will become 2 4x plus x square, right? Here it is also 2, no, I did the mistake here. I have to write here 2 into 2ab, so here it will be 4x and plus 81. So when we observe it, that is x square will be cancelled out from this x square, right? okay, this x square, let's put the this 4 will be cancelled out from this 4, right? okay, so let's put the number aside, and that will be 8x is equals to, when we do this, so here will be minus 8x is equals to 81 minus 25. guys, what is the value of 81 minus 25? So it will be 11, that is 6. okay, so I am erasing this, okay, to get the space. okay, so here it is, I am taking here minus 8x, and that is equals to, subtract we will do, so 11 minus 5, that will be the 6, and 7 minus 2, that will be 5. So when we will put the 7 will be minus 7 answer, so x will be minus 7. This is the answer. okay, now come to the next question. The next question states that find the value of y for which distance between the points is tan unit. The distance is given to you, so we are going to find the distance between PQ, and the distance formula states that x2 minus x1 ka whole square plus y2 minus y1 whole square, and that is equals to tan. That is given to you, so no worries. It's very easy question, guys. So we will put the values, that is PQ is equals to what? PQ is equals to tan, and we are going to put the value, that is x2 is what? 10 minus 2, that is x1, plus y2 is y, or y1 is minus minus will become plus, so it will become this, equals to 10. So we are going to do squaring both sides. So I am doing squaring both sides, and from this what will happen, we have to find the value of y, right? okay, so let's do it. So squaring, after squaring we will get at square of 8 is 64. okay, and we will use the identity again, a plus b ka whole square, that is y square plus 6, sorry, it will be the square. okay, so here it is y square plus 6y plus 9, and that is equals to 100. okay, because we are doing squaring both side. So squaring both side करने से क्या होगा, रूट तो हट जाएगा और इधर का स्क्वायर हो जाएगा. So when we solve it further, it will become what? It will become y square plus 6y, and it will be 73 minus 100.
and that is equals to 0. So it will become a quadratic equation, y square plus 6y, and when we subtract it, it will become what, 25 plus 27. Okay, that is equals to 0. So when we are going to use middle term splitting technique, right? Okay, so I am doing this here. Okay, so after subtraction we should get the 27, so it's 3 and 9s are, so y square plus 9 minus 3y, I am taking this, minus 27, and that is equals to 0. So y square plus 9y minus 3y is equals to sorry, not equals to, minus 27 is equals to 0. So y will taken as a common, so it will become y plus 9, and minus 3 is taken as a common, so y plus 9 equals to 0. So here is two value of y that is possible. So y plus 9 is equals to 0 and y minus 3 is equals to 0. So two possible values are here, guys, and that will be y equals to minus 9 and y equals to 3. So yeah, these are the answers. Okay, so we get the two answers, and the answer is y is equals to minus 9 or y is equals to 3. This is your answer, guys. Okay, so now come to the next slide. Find a relation between x and y such that point x and y is equidistant from the point this and this. So very interesting question, guys. Okay, तो हमको क्या बोला है, x and y दो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं और इससे ये दोनों ही इक्विडिस्टेंस है. तो मैं एक और बात ये बना लेती हूँ. ये x और y जो है कोऑर्डिनेट बीच में रखे हुए हैं. यहाँ पे एक पॉइंट है 3,6 इधर हो सकता है और -3,4 कोई भी किधर भी हो सकता है. दैट जस्ट इग्नोर दी साइड्स. ओके, सो आई एम टेकिंग दिस A, B, okay, and it is equidistant, so we are going to use the same concept, and suppose it is the C, so it is given again that AC is equals to BC. This is given to you. Okay, so here it is given. Okay, now we are going to use the formula. So formula used is what? If you will do the question in this examination in this way, you will get good marks. So exact distance formula we are going to use. Okay, so it is x2 minus x1 square plus y2 minus y1 whole square. So I'm going to use it. Okay, now solve it. So what is AC? Okay, first of all we will find the AC. So AC is what? AC is x minus 3 whole square, right, plus y minus 6 whole square. Clear it is. And now what is CB? So here CB is equals to this, that is x minus CB बोलो या BC बोलो, जो भी तुमको लेना है. So it will become, it will become x plus 3 whole square. Okay, let's not confuse you. Let's take it x2, that is minus 3, and x1 is x square plus 4 y2 minus y whole square. Okay, so now we know AC is equals to CB. So we are going to use this value. So let's put the value, and the values will x minus 3 plus y minus what? It's 6. Let's put it equals to minus 3 minus x whole square plus it's 4 minus y whole square. So we will do again, that is squaring both side. Okay, when we do squaring both side, what we will do here, it will become x minus 3 whole square plus y minus 6 whole square, and here it will become minus 3 minus x whole square plus 4 minus y whole square. So we are going to use that identity again. Okay, so I'm using it, my x square minus 6x plus 9 plus y square minus 12y plus 6 square, that is 36, is equals to again it will be 9 minus 6, that will be the plus, right? Okay, so here it will be minus it will be plus 2ab, so x plus x square, or plus, that is 16 minus 8y plus y square. So when you observe it, that is x square will be cancelled out from this x square, y square will be cancelled out from this y square. The remaining term we will write in this direction. So write it. Let's 6x is here, so it will become minus 12x. Okay, or here when we put 8y is here in this case, so minus 4y is here, and that is equals to 16 plus 9 minus 36 minus 9. So this 9 is also cancelled out from this 9. So that will be equals to 2, 1 carry,
Okay, sorry, suppose here plus minus minus, so it will come minus 20, and here it is, let's taken 4 as minus 4 as a common, so it will come 3x plus y. So yeah, 3x plus y is equals to 5. So we get this. So question state relation between x and y. So we get the relation between x and y, that is 3x plus y equals to 5. Okay guys, now come to the next question. Next slide. Next slide shows the section formula. The sections of formula is for that condition कि अगर मान लिया जाए दो लाइन है, ठीक है, अगर मान लिया जाए, मैं एक लाइन बना देती हूँ, जैसे मान लिया जाए दो लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ पर एक पॉइंट है बी, और मान लिया जाए कि ये एक पॉइंट है सी जो इसको किसी रेशियो में बांट रहा है, इक्वी डिस्टेंस नहीं है, इक्वी डिस्टेंस के क्वेश्चन हमने कर लिया, अगर ये मिड में नहीं है, मान लिया जाए कि ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो मैं सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है एक्स और वाई, इसको कैसे फाइंड करूंगी? तो ये तरीका है, ये सेक्शन फॉर्मूला इसके लिए बनाया गया है। ये एक्स को निकालने के लिए मान लीजिए कि इसके जो कोऑर्डिनेट है दोस्तों वो है x1 y1, और इस b के कोऑर्डिनेट हैं x2 और y2। तो हमें x और y निकालने के लिए यहाँ पर x एंड y है, m, और व्हाट इज m1 है द रेशियो जिससे कि वो जो पॉइंट है c, ये जो तीसरा पॉइंट है वो उन दो पॉइंट्स को इस रेशियो से डिवाइड करता है, तो उसे हम m1 एंड m2 रेशियो से शो करते हैं। क्लियर इट इज? ओके, now come to the questions related to it. So just recall the formula that x, if we have to find the value of x, what we have to do, m1 हमको लेना है, उसके साथ में x2 लेना है, m1 x2 then m2 x1, और दोनों ही रेशियो का नीचे डिनोमिनेटर में सम कर देना है। ओके, सो लेट्स डू द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लाइन। क्वेश्चन स्टेट्स दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। नाउ इट इज व्हाट? ट्राइसेक्शन, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। अब मैं इसमें दो क्वेश्चन को कवर करने वाली हूँ, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो भी आप कर सकते हैं, और इस तरीके का क्वेश्चन पूछे तो भी कर सकते हैं। ये है 4, -1, ये है -2, -3। आपको ट्राई सेक्शन में कोऑर्डिनेट को डिवाइड किया है, ट्राई सेक्शन यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो मैंने ऐसे बोल दिया कि ये मेरा कोऑर्डिनेट है ए, ठीक है, ये मेरा कोऑर्डिनेट है बी, और ये जो बचे हुए कोऑर्डिनेट है इनको मैं ले लेती हूँ सी और डी। तो मान लिया जाए कि जब मैं सी की बात करती हूँ तो ये क्या हो रहे हैं, फॉर सी हमारे के लिए क्या आएंगे, फॉर सी कोऑर्डिनेट के लिए जब हम सी के एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो हमारा m1 और m2 क्या हो जाएगा दोस्तों, उस टाइम पर हमारा जो m1 हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, और m2 हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स है, तो ये सारे इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये रेशियो में क्या हो गया, जो ए और सी के बीच में डिस्टेंस है वो 1 है, तो सी और बी के बीच में कितनी हो गई, 2, तो 1:2 इस तरीके से हो जाएगा। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि रेशियो आपको दे दिया, m1 m2 दे दिया है, तो सिंपली आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अब वो क्वेश्चन ऐसा हो चुका है, तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट से। हमारे फॉर्मूले को यूज करेंगे हम, हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला है उसके हिसाब से x की वैल्यू हम रखाएंगे m1 क्या है हमारे पास में 1, ठीक है, इंटू पहले वैल्यू लिखूं m1 x2 प्लस m2 x1 upon m1 plus m2. So let's put the values. X will be equals to, x is what, m1 is 1, x2 is -2 plus m1 is 2, x1 is 4 upon, okay, m1 plus m2 that is 3, ठीक है। So when we solve it, -2 plus 8 upon 3, so it will be 6 upon 3, that is 2. So we get the value of x only. Okay, now come to the y. So for again we will use the formula, that is y is equals to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. Clear it is? Okay, so y is equals to m1 what, 1, m1 was 1, y2 is what, y2 is -3, right, and y1 is -1, so -3 -1, so m plus 2, that will be equals to what, so when we solve it further it will be -3 -2 upon 3 -5 upon 3. So we get the coordinate value of c, and the c is equals to what we get if the value of x is 2 and the value of y is -5 upon 3. Now we have to find the value of d, right? So let's consider this is x dash and y dash. Okay, so now what we have to do to find for d, so for d क्या हो गया, for d that is x dash and y dash,
ठीक है. So here m1 will be 2 and m2 will be 1. So what will happen, because here is a d, so m1 will be 2 and m2 will be 1. Clear? So now we have to find the value of x dash. So we will put the value 2 into, okay, m1 is 2, so what is the value of x1? X1 is 4 and x2 is minus 2. 4 and minus 2. 4 and minus 2 upon the sum of this. So it will become 8 minus 6. Again it will be what? 8 minus 2 matlab 6 upon 2. So now come to the y dash. So y dash will be what? 2 into y2, that is minus 3, plus 1 into minus 1 upon 3. So it will become minus 6, 3, that is minus 7 upon 3. So this is the new coordinate for the d, that is x dash y dash, and that is equals to what? 2 comma minus 7 upon 3. So this is the solution of this question. Now come to the next question. So guys, मैंने बहुत सारे important questions इस वीडियो में include कर दिए हैं. Find the ratio in which the line segment joining the points divided by this. So what we have to do? We have to find the value of m1 m2. यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है, ठीक है. तो m1 and m2 को हमें इसके अंदर फाइंड करना है, and according to our section formula x and y is here. Okay, so let's put the section formula. Section formula states that x is equals to m1 x2 plus m1 x1 upon m1 plus m2, right? Okay, now so let's do one thing. Let's let करते हैं, ठीक है. Here we will let that the ratio is, okay, k ratio 1. That means it means what? K is equals to m1 and 1 is equals to m2. Clear? So we will put the value of, okay, my x, that is minus 1. So minus 1 is equals to m1, that is k, x2 is 6 plus m1 is, क्या गलती करी, sorry, here it is m2. So m2 is 1 and x1 is what? Minus 3. Okay, upon m1 plus m2, that is k plus 1. Clear it is? When we do the cross multiplication, it will become minus k minus 1 and that will be equals to 6k minus 3. Let's find the value of k. So here it will be let's do this. So it will become 3 minus 1 and it will become 6k. That k minus k will come here and it will become plus k. So 7k, 2 is equals to 7k. So here you will observe that k is equals to 2 upon 7. That means when we put the value of k, okay, क्योंकि हमने let किया था, हमने let किया था m1 m is equals to k upon 1. So we will get the value, we will put the value of k, that is 2 upon 7 upon 1, so 2 upon 7. So yeah, this is the ratio. m1 ratio m2 is equals to 2 ratio 7. Now come to the next question. Next question ये रहा दोस्तों. Find the coordinate of point A where AB is the diameter of the circle. Wow, here is a circle, suppose. Okay guys, this is the circle. Okay, one second. Okay, so here it is a circle. One thing is given that AB is the diameter, that is A and B. Okay, so B is given as 1,4 and कोई point है center में, ठीक है, यहाँ पे कोई center है हमारा और center के coordinate दे रखे 2 minus 3. मैं इसको 0 point ले लेती हूँ, ठीक है, 2 minus 3 दे रखा है and we have to find the value of x, that is coordinate of A, that is x y. ठीक है. So for that we are going to use section formula. You know guys कि diameter जो है, center जो है वो diameter को 2 equal parts में divide करती है. तो यहाँ पर जो हमारा ratio हो चुका है वो 1:1 हो चुका है. So here what will happen, here m1 and m2 will be equals to 1, right? Okay, तो दोनों ही equal to 1 हो गए, ठीक है. So हमारा जो section formula we use हम करते हैं और सेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से x इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, बट वो x जो होता है वो ये वाला पॉइंट होता है ना, ये o वाला पॉइंट होता है, क्योंकि हम तो मिड वाला पॉइंट निकालते हैं जब भी सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं. लेकिन यहाँ पे उल्टा कर रखा है, यहाँ पे ये जो x है y है वो एक्चुअली क्या होगा, x1 y1 होगा. तो लेट्स पुट फर्स्ट द फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला इज m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. So first of all we will solve it for it. So let's do it. Here x is what, 2. Okay,
here x is 2, m1 is what, 1, and x2 is what, 1. Okay, so 1 into 1, x2, this is x2, right? Okay, plus m2 is what, 1, and x1 is what, x1 is x upon m1 plus 1, 2. So when we solve it, it is 4 and 1 plus x, so x is equals to 3. Okay, now we will solve it same as it is for y also. So here y is equals to what, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. So what is the values here? Y is minus 3. Okay, m1 की value 1, y2 is 4 plus m2 is 1 and y1 is y, 1 plus 1. So here it will be minus 6 is equals to 4 plus y. So what is y here? Y is minus 10, guys. So this is the solution. Hope you understand it. Now come to the next slide. Oh my god, there is another question which is given as that the 4 vertices are given that are vertices of parallelogram. Okay, so given in order and you have to find the value of x and y. So first of all we will make a parallelogram here. So here it is a parallelogram, suppose, right? Okay, so here it is 1 comma 2, here it is 4 comma y. Okay, here it is x comma 6 and here it is 3 comma 5. Okay, so this is the coordinate. Suppose the coordinate name of the coordinate is a, b, c and d. One more thing, we will make the diagonals of it, and you should know that the diagonal of the parallelogram bisect each other. Bisect, it means it is in 1:1 when we discuss about BD. So this point O here, so this point O divide BD in 1:1 or AC in 1:1. So from this concept, we using section formula, we will solve it. So first of all, okay, so that is x equal parts, that divide in equal parts. Okay, so it means whatever the point it is, okay, whatever the point it is okay, suppose let it be what can we use, a comma b, small a and b, let's it. Okay, so let's do the question. Let's find the value of a. So we are using the section formula. Again I'm writing in here section formula, that is x is equals to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, same as it is y is equals to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. So let's use it. So for AC, suppose to for AC we will solve first. So for AC what will happen, because ratio will be 1:1, so here a will be m1 is 1, x2 is x plus m2 is 1 and x1 is what, 1. Okay, so let's observe very carefully that 1:1, because here diagonals of parallelogram bisect each other in 1:1. So m1 m2 will be 1. Okay, so when we solve it, we will get the value of a. So here the value of a is x plus 1 upon 2. Okay, now for value of b, so here value of b will be, b is what, we will put the values, that is m1, that is 1, y2 is 6, right? Okay, plus m2 and y1 is 1. Okay, divided by, okay, so divided by what, 1 plus 1, that is 2. So value of b is 6 plus 1 upon 2, that is 7 upon 2. Okay, this is for AC now. Okay, now come to for BD. So for BD, okay, for BD again what will happen, m1 m2 is equals to 1, and let's make BD here so it will be easy for us. Okay, this is the center O, that is a comma b. Okay, so I'm just using the parallelogram, the line BD, that is 3 comma 5, this is D 3 comma 5, and this is B, and what is it, 4 comma 1. Okay, so yeah, so let's solve it. AB for A and B. So here again A is section formula using that is m1 into x2. x2 here is 4 plus m2 into x1, that is 3 upon 1 plus 1, that is 2, 4 plus 3, that is
2, that is 7 by 2. Now come to for B. Again, B is what? M1 into Y2. Y2 is Y plus M2 into Y1. Y1 is 5. So let's put it 1 plus 1, and that is equals to Y plus 5 upon 2. That is B. Now what? Now we have to compare A and B. So let's compare. A is, in the previous section, A is x plus 1 upon 2. X plus 1 upon 2. So here A is x plus 1 upon 2, and that will be the 7 upon 2 because we get the same coordinate na. So 2 will be cancelled out, so x plus 1 will be 7, so x will be 6, and this is our answer. Now come to the value B. So what is B? B is equals to y plus 5 upon 2, and in the previous we get 7 by 2. So we will put here 2 will be cancelled out. So y plus 5 is equals to 7 and y is equals to 2. So yay, we got the value of x and y. Now come to the next slide. So another important question is here, if A and B are 2, minus 2, minus 2 and respectively, finally the coordinate of P, we have to find the coordinate of P. So okay, AP is 3:7. So very easy, you have to do in this. I'm just explaining this question and you have to do this question. Okay, so this is homework for you. ठीक है, this is A and this is B, and here is some point P, and the ratio of AP upon AB. What will happen to, we have to find the coordinate of x comma y, right? And here it is -2 and it is 2 -4, right? Okay, तो बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पर AP की जो वैल्यू आपको दे रखी है, हम क्या कर देते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको डिवाइड कर देते हैं। AP अपॉन AB जो हो गया है वो आपका क्या हो गया है, 3:7 हो गया है। क्लियर इट इज? ओके, तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब AB जो है वो नीचे की पूरी 7 है, इट मीन्स इट इज 7x सपोज, ठीक है, नॉट डोंट टेक x हियर, so 7 a small a another variable, ठीक है, and it is supposed to be 3a, ठीक है, then what will be PB? That will be 4a. So from here, from this, what we can do, from this we can write that AP divide AB in ratio 3:4. So guys, ये अब M1 M2 हो चुके हैं और x1 y1 x2 y2 आपको given है, so you can find the value of x y. Now its question is very easy, so guys find it the values of x and y. This is a homework for you. Okay, so bye bye. Come to the next question. Oh, next slide. This slide shows a different concept that you can find the area of triangle. If suppose there is a triangle given to you, this is a triangle, okay, in a coordinate form. Suppose it is given in this way, x1 y1, and okay, here it is x2 y2 and here it is x3 y3. So you can find the area of this triangle by using this formula. Okay, this is the derivation by using the basic concept formula of area of triangle. It derived by the scientist, so we can use this. It's very simple, half, and you have to what, x1 y2 minus y3, it's counting 1 2 3, but x को बाहर लेना है और y को अंदर लेना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो x1 लेंगे तो y2 minus y3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x2 बाहर लेंगे तो y2 minus y3 करेंगे, और x3 को लेंगे तो फिर y1 minus y3 करेंगे। तो सीक्वेंस चलती जाएगी, देखो 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2, ठीक है। सो बेसिकली ये यूं चल रहा है 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3। तो क्या हो रहा है, पहले ये 1 2 3 यूज हो रहे हैं, फिर ये 2 3 1 यूज हो रहा है, और फिर ये 3 2 1 3 1 2 यूज हो रहा है। सो बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है। Okay, now come to the next slide. That is question related to this. You have to find the value. Oh, you have to find the area of this triangle. So let's find the area of triangle का क्या फॉर्मूला होता है। अभी अभी बताया था आपको दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ, क्या लिखना है, x1 लिखेंगे, अंदर लिखेंगे y2 माइनस y3, फिर x2 लिखेंगे और फिर अंदर लिखेंगे y3 माइनस y1, x3 लिखेंगे, 3 के बाद क्या आता है 1 2, y1 minus 1 2. This is clear. So let's put the values. Okay, so I'm putting this area of triangle.
ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, आई एम राइटिंग इन दिस वे. So half into, let's put the value. What is x1? Here it is 2. ठीक है. Okay, y2, 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 y2 is here, it is 0. Okay, minus y3 is minus 4, that is 4. ठीक है, plus x2 is minus 1, y3 is minus 4, my y1 that is 3. Okay, plus x3 is what? This is x1, this is x2, this is x3, यानी 2. And y1 is what? 3, and y2 is 0. Clear? Now solve it. Half 2 into 4 minus 1 into minus 7, or 2 into 3. ठीक है. So here it is half, अंदर हो गया 8 minus 7 minus minus plus और plus 6, so 14 plus 7, that is 21 upon 2. Okay, so here it is the answer. Okay guys, अगर कंफ्यूजन हो रहा है x1 x2 x3 में, तो बहुत ही सिंपल से इस कोऑर्डिनेट को x1 y1 लिख दीजिए, इसको x2 y2 लिख दीजिए और इसको x3 y3 लिख दीजिए और फिर वैल्यूज को पुट कर दीजिए. बहुत ही सिंपल है दोस्तों. चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसके अंदर एक और क्वेश्चन लिखा है कि k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर तीनों कोलिनियर है. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूँ. एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो 0 हो जाता है जब भी जो पॉइंट्स होते हैं वो कोलिनियर होते हैं. तो हम बहुत ही सिंपल से ये वाला कंसेप्ट लेने वाले हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, ये जो होता है हाफ, that is x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 and plus x3, that is y1 minus y2, and that will be equals to 0 in case of कोलिनियर. तो वैल्यू को पुट करना है और k की वैल्यू फाइंड करनी है. तो जल्दी से वैल्यू को पुट कर देते हैं. हाफ x1 की वैल्यू पुट करेंगे हम 7, y2 की वैल्यू देखिए y2 है 1, y3 है k, प्लस x2 है 5, y3 है k, y1 है माइनस माइनस प्लस 2, x3 है 3, y1 है -2 and y2 है -1. So just put it out, guys. So half, here it is 7 1 minus k plus 5 k plus 2 and plus 3 into -3. तो ये जो प्लस, ये इधर का हाफ है उधर चला जाएगा, then it is again will be equals to 0. So I am neglecting it and just writing it 7 minus 7k plus 5k plus 10 minus 9, and that is equals to 0. So k will be solved out. Sorry, k will be solved. So it will become 7 minus 2k plus 1, that is equals to 0. So 2k, let's put it here. 8 is equals to 2k, so we get the value of k, that is the 4, and that is your answer. Okay, now come to the next slide. Okay, there is one more question is given here, that find the area of the quadrilateral whose vertices taken in order. आपको एक quadrilateral दे रखा है. समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड है. आपको चार पॉइंट्स दे देंगे एंड यू हैव टू फाइंड दैट ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है. तो आपको इनके बीच की डिस्टेंस निकाल कर पता करना पड़ेगा कि ये अगर चारों सेम है तो इट मे बी स्क्वायर और व्हाट, रॉम्बस. और अगर इनकी दो आमने सामने की इक्वल आ रही हैं साइड्स की लेंथ, तो इट मे बी आयत, मतलब सॉरी इट मे बी रेक्टेंगुलर. ठीक है, इट मे बी रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम. ओके, सो बट वो डिस्टेंस फॉर्मूला से है, बट यहाँ पर तो हमें एरिया निकालना है तो हमें एरिया वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. तो हमें इसका एक फिगर बना देती हूँ यहाँ पे फटाफट से. मैं इस क्वेश्चन का सिर्फ कंसेप्ट बताने वाली हूँ दोस्तों. आपको सॉल्व आपको खुद करना है. मैं इस वीडियो में अब इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने सिखा दिया है. तो ये 3 - 2 और ये 2, 3 है. तो हमें इसका हमें एरिया निकालना है दोस्तों. तो इसके लिए हम बहुत ही एक छोटा सा काम करेंगे. हम यहाँ पे बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये को 2 ट्रायंगल में तोड़ देंगे. तो आप पहले एक ट्रायंगल का एरिया निकालो इन तीनों कोऑर्डिनेट का यूज कर और फिर दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकालो दोनों कोऑर्डिनेट का यूज कर और दोनों को
दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद में दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा दोस्तों। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो निकालिए इनका एरिया और दोनों का ऐड कर दीजिए। नाउ कम टू दी बट इन एग्जामिनेशन या तो मेंशन कीजिए कि आप पहले किसका ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, और अगर आपको ज़्यादा ईजी लगता है तो आप इनके नेम भी दे सकते हैं, ABC डी, ताकि आप ABC ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं और फिर ACD ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं और फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। उस पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसमें एरिया फाइंड करना है जो कि मिड पॉइंट साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़कर मिला है। तो पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं फटाफट से, जैसा कि इसने बोला है। ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने इस ट्रायंगल के मार्क कर दिया है, ये A है, ये B है और ये C है, और इनके कोऑर्डिनेट्स भी मार्क कर दिए। A जो है वो 0-1 है, B जो है हमारा 2,1 है और C जो है 0,3 है। एंड इट इज गिवन दैट आपको एरिया फाइंड करना है उस ट्रायंगल का जो इनके मिड पॉइंट से मिला है। तो यहाँ पे एक मिड पॉइंट है, इसका एक मिड पॉइंट है, इसका भी एक मिड पॉइंट है, और इन तीनों को मिला दिया तो एक ट्रायंगल बन गया। तो ये मिड पॉइंट है D, E और F, ठीक है। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द रेशियो आल्सो टू इस ट्रायंगल का DEF ट्रायंगल का एरिया अपॉन ABC ट्रायंगल का एरिया। तो ये आपको करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। आपको क्या करना पड़ेगा, इनके मिड पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। मिड पॉइंट किससे निकालेंगे, हम हमारे सेक्शन फॉर्मूले से मिड पॉइंट्स निकालेंगे इनके। तो ये सपोज मान लीजिए मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ, ये हमारा x1, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, x1 नहीं देते हम, थोड़ा सा नेमिंग को हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं स्मॉल a b दे देती हूँ, ठीक है। ये मेरे स्मॉल c d हो गए हैं, ठीक है, और ये स्मॉल e f हो चुके हैं। तो मैंने इनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं। अब मैं a b c d इनको सेक्शन फॉर्मूला यूज करूंगी। तो सबसे पहले मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज करती हूँ। हमारा सेक्शन फॉर्मूला बोलता है कि अगर आपके, क्योंकि मिड पॉइंट है तो m1 और m2 जो है वो हर जगह पर इक्वल्स टू 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं हर जगह पे यही लेने वाली हूँ हर टाइम पर। तो अब हमारे पास में क्या सेक्शन फॉर्मूला कहता है, x इज इक्वल्स टू होता है m1 x2 प्लस m1 x1 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और सिमिलरली y के लिए लगा देते हैं, तो y m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 लगा देते हैं। एग्जामिनेशन में जब m1 और m2 को कुछ हम जब इक्वल दे रखा होता है या 1-1 लिया होता है तो हम डायरेक्ट यू में लिख देते हैं x2 प्लस x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर इट इज, ओके। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, बट इन नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगी, बाकी आप करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, मैंने a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको पीरियड वाली इस साइड से देखना पड़ेगा। a की निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 0 + 2 अपॉन रेशियो का डिवाइड कर दिया है, दैट इज 2, सो इट विल बिकम 1। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द b, एंड b व्हाट, b इज दिस 1 एंड -1, ठीक है। सो 1 - 1 1 - 1 upon 2 and that is 0. Let's find the c. Okay. So c is here, c is 0 plus 0 upon 2. What is d here? For d, this is the midpoint of AC, so -1 and 3. What is e here? E is midpoint of B and C, so this is x1 and this is x2, so d e f. So when we put the value of f is what, 1 and 3. So ठीक है, सो वी गेट द वैल्यूज, दैट इज अ न्यू ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल्स था हमारा, तो हमने बनाया था, तो हमारे को d के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं। d के कोऑर्डिनेट हो गए हैं 1,0 e d e, ठीक है। e के जो कोऑर्डिनेट हो गए हैं वो है हमारे ef, तो ef ले लिए हैं हमने 1,2 और f के कोऑर्डिनेट हो गए हैं 0,1। तो ये तीनों ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं। डी एफ और ए बी सी के आपको कोऑर्डिनेट गिवन है दोस्तों। कौन कौन से दे रखे हैं, ए बी सी के हमको दे रखे हैं 0, -1, बी के आपको दे रखे हैं 2,1, ठीक है, और सी के आपको दे रखे हैं
0,3। तो बस अब आपको इस ट्रायंगल का DEF और ABC दोनों ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से दोनों का एरिया निकालना है और दोनों को इसमें वैल्यूज को पुट कर देना है। मैं लास्ट लाइन और लिख देती हूँ यहाँ पे आपके लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF को आपको यहाँ पुट करना है एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को आपको डिनोमिनेटर में पुट करना है और जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर है गाइज। सो सॉल्व इट, दिस इज योर होमवर्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। If you like my video, please like it, share it and subscribe it. Bye bye.